Right, we started the refrigeration. So it is a process of creating and maintaining the temperature lower than the surrounding temperature, right? This is the refrigeration. And air conditioning. Air conditioning we will study afterwards. First of all, let's talk about the refrigerant. Right, the heat carrying medium in the refrigerator system is known as heat refrigerant. Okay, so there are two types of refrigerant actually: primary refrigerant, secondary refrigerant. What is primary refrigerant? Primary refrigerant is a refrigerant upon which the compression expansion takes place and undergoes cycle to produce a lower temperature. Right. Then why we are talking about the secondary refrigerant actually? Secondary refrigerant are first cooled, right, by primary refrigerant. Then it is used for the cooling purpose like air, right, water. This is a secondary refrigerant. All right. So generally when there is a fridge, right, refrigerator, there is a refrigerator in your house, right? You will call it as a fridge, but it is a refrigerator. So in the refrigerator, you will notice that there is a the air is cooled air. Okay, when you place the vegetables, what happens? The air gets heated. Air inside the refrigerator gets heated, and that air, right? That air is again cooled by uh, this primary refrigerant. What happens? The density of the air, when the heat energy absorbed by the air, then the density of the air it decreases. Okay, then the air goes upwards. The density increases, then the air goes upwards, and there is a fan, evaporator fan in upside. Okay, so evaporate क्या बोलते हैं अपन उसको evaporator, right? Evaporator fan is there. So evaporator, what it will absorb the heat from the air, then the air is gets cooled, then the air will come down again, it goes up, like the process continues. So secondary refrigerant actually are first cooled by the primary refrigerant, and that is used for the and it is used for the cooling at the desired place. Okay, refrigeration effect, this is one of the important term. It is the amount of heat which is to be extracted from the storage space is known as, in order to maintain at lower temperatures, known as refrigeration effect. What is a particular unit of refrigeration? So 1 ton of refrigeration, they are generally known as a ton. Ton is not 1000 kgs. Okay, it is nearly around 900. Okay, according to British thermal units. All right, so whatever the heat, suppose water is there at 0 degree and air ice is there, so the amount of energy which is extracted from 1 ton of water at zero, which is at 0 degree centigrade, in order to convert into ice, 1 ton of ice is known as the 1 ton of ice, it is the unit 1 ton of refrigeration. All right, what is the unit of refrigeration? 1 ton. Okay, it is equal to nearly 3.75 kilowatt. Suppose for example we will look, right, in 24 hours, right, in one day you are taking. So what is तो कितना रेट से निकाला, समझ में आया? एक वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, राइट? वाटर का कितना मास है? 1 kg. 1 kg ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 1 kg ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है, राइट? दैट इज नोन एज 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इन 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है. सो 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन को 3.5 किलोवाट, ये 3.5 आया कहाँ से, राइट? दैट इज द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन. Actually, 1 ton is nothing but it is not equal to 1000 kgs. Let me tell you, it is not equal to 1000 kg. According to British thermal unit, it's nearly around 900. Suppose अपने को latent heat जो भी water है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर से उसको 336 ले लिया अपन, ठीक है, latent heat per kg, राइट? 336 पर kg, 336 इंटू जो भी अपना ये है, राइट, 1 ton, that is 900, divided by temperature is 273, you will get 3.5 किलोवाट. इतने रेट से निकालना अपन, ठीक है? वाटर है 3.5 किलोवाट यानी किलो जॉल पर सेकंड की, इससे निकाले तो 24 आवर्स में आइस में कन्वर्ट होता हो, राइट? सो एज वी लुक कि 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेटर, जैसा एसी है, एसी में 1 ton है, 1 ton एसी, 2 ton एसी, सो इट मीन्स दैट 3.5 किलोवाट एक सेकंड में निकाल रहा हीट, राइट? 2.5 किलोवाट एनर्जी है ना, उसको एक सेकंड में निकाल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा. दैट इज 1 ton की एसी, राइट? 1 ton की एसी. सो एयर का मास वगैरह ले लो तो 1 ton, दैट इज द 1 ton. Again there are certain controversial things. Okay, so we need to talk about. So ideal refrigeration cycle, first of all we'll talk about ideal refrigeration. It is a reversed Carnot cycle. Okay, gas refrigeration. So in a reverse Carnot cycle, TH, TL, you know this thing. So 1 2, first of all let me tell you the shortcuts in order to draw this cycle. So 1 2 3 4, first 1 से start करना, right corner से एक point डालना, 1 2 3 4. 1 to 2 is isentropic compression process, right? 2 to 4 is, it is takes place in the condenser, right? Isothermal expansion process, isothermal heat rejection process. फिर 3 to 4 isentropic expansion process.
फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर 4 to 1 आइसोथर्मल आइसोथर्मल isothermal compression process, isothermal expansion process, which is heat rejection, heat addition process. Oh, these things you just look at the notes and uh, just to know this process. Okay, 1 2 3 4 dabba type, right? So COP of refrigeration or refrigeration capacity per work input, you know this thing. Okay, if it is Carnot, then TH by TL by TH minus TL, right? TL by TH minus TL. Okay, this thing heat pump by TH by TL minus TH. Okay, this is the things. Now refrigeration capacity, it is refrigeration capacity work into mass flow rate m dot, इसकी refrigeration capacity. Power बोले तो work into m dot, sorry, refrigeration effect into m dot gives you refrigeration capacity, work into m dot gives you power input. Okay, these things you know. Next ideal vapor refrigeration cycle. ठीक है, ये gases refrigerant, ये vapor refrigerant जब भी आता, there is a latent heat takes place, then the vapor dome will come and inside the vapor dome, एक क्वेश्चन था वॉल्यूम 2 में, इनसाइड द वेपर डम बोल रहा था, तो दैट इज आइडियल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल. आइडियल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल सकता, आइडियल रिवर्स कॉर्नर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलता, आइडियल वेपर रिवर्स कॉर्नर कुछ भी बोलता, वेपर डम के अंदर है साइकिल वो भी बोलता, राइट. देर आर सर्टन नेम्स. सो राइट, सो 1 2 3 4 मैं बोला स्टार्ट करना 1 2 3 4. सो हियर द कॉन्सेप्ट इज टू फाइंड द एंथैल्पी सेट 1 2 3 4. ठीक है, ये चीज़ है. सी ऑफ द रेफ्रिजरेटर अगेन टी एल बाई टी एच माइनस टी एल. अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिल रहा है, 1 4 और 1 से मिल रहा है. ओके, एच वन माइनस एच फोर, एच वन माइनस एच फोर, क्योंकि एच वन की एंथैल्पी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हीट ऐड हो रही. 4 पे टेम्परेचर है, एक्सट्रैक्ट कर रहा हीट, 1 पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता 4 से, राइट. सो एच वन माइनस एच फोर डिवाइड बाई डब्ल्यू इनपुट, right, equal to TL by, तो W input equal to H minus H1 minus H4 into TH minus TL by TL, where this refrigeration capacity is given by m dot H1 minus H4 से भी दे सकते हैं, और power input can be given as m dot into H2 minus H1. Power input if you look H2 minus H1 3 to 4 भी कंसिडर करें पर H2 यहाँ से भी थोड़ा वक्त मिलता, H2 minus H1 H3 minus H4, H3 minus H4, H2 minus H1 H3 minus H4. So these are the things. Okay, power input वगैरह. So COP of heat pump, yeah, just like it, and you just solve some questions. I am not going to talk about those questions, just I am going to talk about the theory point of view. Vapor compression refrigeration system. So if you talk about the vapor compression refrigeration system, there is a compressor, first evaporator, compressor, condenser, throttling valve. Each and everything we will discuss deeply. First of all, we will talk about the process, how the process is going to take place. Then we will talk about the compressor, then condenser, then throttling valve, then evaporator. Then we will come to the practical point of view कि अपने refrigerator में, normal refrigerator में where this place things are placed, and we are going to talk about the throttling valve. Okay, important thing, we are going to talk about throttling valve. Then we are going to discuss about the TS diagram. All right. Then afterwards analysis of this particular cycle, then there will be some questions, then the methods to increase the operating parameters to increase the performance. Okay, so first of all let's talk about the evaporator. Okay, so let's talk about the cycle. Evaporator means there is a heat addition. Okay, heat addition process will take place, reversible adiabatic heat addition process will take place. Then it goes to the compressor will increase the pressure and temperature. Then it goes to the condenser again, condensers यानी जो भी अपना वेपर रेफ्रिजरेंट उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता. अगेन थ्रू थ्रॉटलिंग वाल्व वी आर गोइंग टू throttle, why we are going to use the throttle, why each and everything will discuss. So first of all let's talk about the compressor से start करेंगे. Okay, compressor, then at end पे cooling हो रहा, right. So first of all we shall not talk about the cooling, first we talk about the compressor. So again, while plotting the graph, you don't plot from 4 to 1, first plot from 1 to 2. Again you are compressing, you are doing the things. Okay, just know that what is the operator is doing here, and just start from point 1. 1 to 2, 1 to 2 is a reversible adiabatic compression process. So we are going to use a compressor, and you know that compressor is a power consuming device. Okay, why it is used, sir? It is used to increase the pressure, right. Pressure, we are going to use the reciprocating compressor, because volumetric efficiency of reciprocating compressor is very large, and you know उसका जो ये रहता, मतलब ज़्यादा हायर प्रेशर्स में ये करने के लिए भी अपन यूज़ करते हैं, राइट. द कंप्रेसर इन द नॉर्मल और प्रैक्टिकल fridge you have use as in the compressors, right. So it is totally insulated. Why it is insulated? Because we don't want any energy losses. That's why it is insulated. It is perfectly sealed, right. It is very perfectly sealed. We'll talk about this thing. Okay, it is very perfectly sealed, right. So again, why we are not using the pump here?
There is one question why we are not using the pumping instead of compressor. So we are using the vapor refrigerant. Refrigerant will changes its phase. So जब भी वेपर की बात आती है जब अपन कंप्रेसर को यूज़ करते हैं, राइट. कंप्रेसर में लिक्विड का फ्रैक्शन नहीं रहना कभी भी. अगर से लिक्विड का फ्रैक्शन इट विल फॉलिंग विल टेक्स प्लेस एंड कंप्रेसर विल देयर. कंप्रेसर का इफ यू लुक एट द प्राइस ऑफ द कंप्रेसर का प्राइस ही ज़्यादा रहता. इट इज़ नियरली ऑक्यूपाइज अराउंड 70% ऑफ रेफ्रिजरेटर प्राइस, कंप्रेसर प्राइस. सो यू कांट कंप्रेसर विल फेल when there is a falling वगैरह जो भी होता है उसमें, right. So they only vapors. In order to increase the pressure and temperature of the vapors, we are going to use a compressor. When we are going to use a pump we are going to use when when you need to increase the pressure and temperature of the liquid thing. Okay, liquids. You are going to use a pump. So what happens at 1 to 2 reversible adiabatic compression process will take place. Compressor will increase the pressure and temperature. Why it is increasing the pressure and temperature? That is one of the question, right. That is one of the question. That is going to increase the pressure and temperature. Why we are going to use means evaporator में जब भी जो चीज़ रहती है जो अपना वेजिटेबल्स रखते हैं अपन, सो हीट ऑब्जर्व करता, राइट. एवापोरेटर तो टेम्परेचर उसका 4 to 1 है ना. आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है. ओके, हीट ऐड होती. तो हीट को रिजेक्ट करने के लिए वी नीड, तो हाँ लोअर टेम्परेचर पर रहता, राइट, TL टेम्परेचर. इन ऑर्डर टू ये हीट को बाहर फेंकना है अपने को. So you need to have the temperature which is lower, which is lower than the surroundings. So in order to, why we are going to use the compressor means generally evaporator में temperature कम रहता है, right. So जो भी एनर्जी अपन हीट एक्सट्रैक्ट करें वो हीट को रिजेक्ट करने के लिए you need to have the एक्सट्रैक्ट करें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके अपन कर रहे हैं, राइट. टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि the heat flow will take place from high temperature to low temperature. So temperature अपन increase कर रहे हैं, pressure increase कर रहे हैं, right. Then we are going to use a condenser. कंडेंसर में क्या रहता, जब भी हाइयर टेम्परेचर रहता कंडेंसर कॉइल्स में से जाता वेपर्स, जो भी वेपर रहता वेपर इट विल ओनली वेपर कंप्रेशन, राइट. रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ओनली वेपर रेफ्रिजरेंट. सो फिर कंडेंसर में जाता. सो वेपर्स टोटल जो भी वेपर्स रहते हैं दैट वेपर्स कंडेंसर्स again it will form liquid, right. It will form the liquid. So कंडेंसर क्या करता, कंडेंस करता. कंडेंसर कॉइल्स रहते हैं ना, वो कॉइल्स से होते हुए गुजरता वेपर एंड इट विल कंडेंस टू लिक्विड. अगेन लिक्विड का टेम्परेचर हाइयर रहता है व्हेन कंपेयर टू. अगेन वी आर गोइंग टू यूज अ थ्रॉटलिंग वाल्व टू डिक्रीज द टेम्परेचर, राइट. जनरली फ्रिज में टेम्परेचर क्या रहता है, वेजिटेबल्स रखे, वेजिटेबल्स का टेम्परेचर हाइयर देन द ये एयर का टेम्परेचर. सो हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस. एयर विल गेन सम एनर्जी and air will gain some energy and that energy जो भी evaporator रहता है उसको वो evaporator heat जो भी air की energy है that will extract the heat from the air. Again we are going to use a compressor, right. We are going to use those vapors जो भी है जो भी heat extract हो रही we are sending to the, again we are sending to the vapor refrigerant ये होता है. refrigerant को अपन कहाँ भेज रहे हैं, कंप्रेसर में भेज रहे हैं. प्रेशर और टेम्परेचर कंप्रेसर का इंक्रीज हो रहा, देन कंडेंसर. सो वी आर गोइंग टू यूज अ कंप्रेसर, राइट. सो कंप्रेसर एक्चुअली इफ यू वांट टू यूज अ कंप्रेसर देन एवापोरेटर रहता है. एवापोरेटर का एवापोरेटर में व्हाट हैपेंस टू द एयर, ठीक है. एवापोरेटर क्या करता, अपने एयर से एनर्जी हीट एक्सट्रैक्ट करता, राइट. इट इज रिवर्स आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट. So it will extract the energy. Now you have to, now the refrigerant जो भी रहता अपने को हीट है ना, refrigerant वही एनर्जी जो भी एक्सट्रैक्ट करे we have to throw out of that thing. Okay, so what happens it will the refrigerant जो भी रहता it is going to get converted into vapor once it get heated, right. Once it will extract the heat, it is converted into vapor, right. Vapor. Now what the vapor will do, right. What the vapor will do, what again we need to convert it into liquid, ठीक है. इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना रहता अपने को. सो हाउ टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, अगेन वी आर गोइंग टू हीट दिस वेपर, राइट, विथ हायर इसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं अपन. टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, राइट. प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. देन कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं अपन. कंडेंसर में क्या होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जाके कंडेंसर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर ड्यू टू हीट ट्रांसफर द वेपर्स इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड,
इन द कंडेंसर। अब ये बात आती है कि वेपर को डायरेक्टली कंडेंसर में काहे को नहीं भेज सकते अपन, राइट। कंडेंसर में काहे को नहीं भेजते, कंडेंसर में कैसा जाता, वी नीड टू इंक्रीज द प्रेशर, राइट। प्रेशर एंड ऑल्सो द टेम्परेचर। अगेन एक बात आती है, प्रेशर इंक्रीज करना है तो कंप्रेसर में अपन टेम्परेचर काहे को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। सो आफ्टर द कंप्रेशन प्रोसेस देर इज नहीं, आफ्टर द एवापोरेशन प्रोसेस, तो द वेपर रेफ्रिजरेंट जो रहता है दैट विल बी इन द वेपर फॉर्म, right, that will be in the vapor form. So that will be converted into vapor. So it extracted some heat. Due to the extraction of heat, it is converted into vapor, right? Point 2 देख लो, point 1 देख लो. Then we have to, there are two things from here. One, we need to reject this heat to the atmosphere surrounding, right? The low pressure and low temperature steam, that is at TL temperature itself. इवापोरेटर के टेम्परेचर पे ही है वो, आइसोथर्मल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है वो, right? Isothermal heat addition process हुआ, then isothermal heat addition process में entropy increase होती, right? So then two things we have to do. One thing, we have to reject this particular heat into the atmosphere, right? In order to uh, the right, we have to reject the heat to the atmosphere. देन इफ़ यू लुक कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर -10 है, एटमॉस्फेयर का नियरली अराउंड 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक प्लेस बिकॉज इट वायलेट्स द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, राइट। सो वी कांट, दो बाहर से अंदर आ सकती है हीट, अंदर से ये हीट जो भी अपने ये हुई एनर्जी, दिस कांट गो, बाहर नहीं फेंक सकते। So what we should do, we need to increase the temperature. Once we maintain the temperature between the outside surroundings and inside this vapor, then it is going to reject the heat, right, from the air. So what we are doing, we are going to use the compressor, right. Then एक बात आती है कि why we are going to use a compressor, pressure का को increase करना, pressure we are going to increase the pressure to maintain the flow, right, from high pressure to low pressure, that it thing from what compressor will suck all the vapor refrigerant, it will increase the pressure and temperature, right. It will increase the pressure also as well as temperature. Now if you look at the vapor dome, if we increase the pressure, what happens to the boiling point temperature, right. Boiling point temperature is going to increase, right. Pressure cooker है, sorry, if we going to increase the pressure, right, if we are going to increase the pressure, the radiative requirement is going to decrease, right. Radiative requirement is going to decrease, so that's why you use the pressure cookers. We increase the pressure of the cooker so that cooking will take place, boiling will take place at low temperature, cooking will be easy, right, right, that is the thing. So boiling point temperature will increase, latent heat requirement will decrease, right, that is the thing. So अब वेपर हो गया, वेपर का प्रेशर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, नाउ इट विल फ्लो टू द कंडेंसर। नाउ कंडेंसर का प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है, ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, the heat is going to, energy is going to flow from that point 2 to point 3. Now condenser, what will do, condenser coils will again will convert the condense yani it will convert the vapor to the liquid refrigerant. And there are three things here. One we need to, once we liquid refrigerant को flow करने, जैसा वेपर है, वेपर को फ्लो करना अपना को मतलब वेपर नहीं फ्लो कर सकती इसमें, if right, वेपर का जो extraction, energy extraction, that is come when compared to liquid, right. We need to have the liquid which is at lower temperature evaporator में. So for that thing we need to convert this vapor into liquid, that is one case. And we need to increase the temperature. Why? Because to for the energy यहाँ से वहाँ भेजने, right. Again, due to the pressure difference it will happen. So these are the three things we are going to use the compressor. So condenser क्या करता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर देता, एंड वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता, एंड वी आर गोइंग टू यूज द थ्रॉटलिंग वाल्व. Okay, here comes the thing, throttling valve. And if you look at that condenser का job क्या है, only to condense the liquid, right. It will not decrease the temperature of the liquid, it will only condense the liquid, yeah, it will not decrease the temperature of the liquid. Okay, it is only, it decreases the temperature but up to not that extent, right. It will reject the heat to the surrounding, right, by converting into this vapor into liquid, alright. It will convert the vapor into liquid. Now this liquid refrigerant, whatever it is, we need to इसको lower temperature पे करना, क्योंकि it must extract the heat from the evaporator, right. It must extract the heat from evaporator. So in order to convert the temperature of this
thing, we are going to use a throttling valve, right? We are going to use a throttling valve. Throttling is a isenthalpic expansion process. It is a small opening, flow through the small opening or of orifice, right? So throttling valve will decrease the temperature of this particular refrigerant. Okay, we are going to use the throttling valve, right? Now liquid में था, liquid plot of the liquid will convert into vapor. So why it is converted into vapor, this we must talk, right? This we must talk, right? Part will convert into vapor. So why we are converting into part of why it is converted into liquid, that we have vapor, that we have to see. All right. So why it is converted into vapor? वेपर कई को है, लिक्विड प्लस वेपर कई को है. सो वेपर कई को है बोले तो जनरली लिक्विड है, वेपर है. इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लो टेम्परेचर लिक्विड, बट आल्सो वेपर इज गोइंग टू कम. वाई? बिकॉज एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज डिक्रीज ये अपना प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, राइट? प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज एंड टेम्परेचर आल्सो गोइंग टू. इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, then boiling point temperature it is going to decrease, right? The boiling point temperature is going to decrease. इसका मतलब यह है कि कम इस पे बॉइलिंग होता है. सो पार्ट ऑफ इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, राइट? दैट्स व्हाई पॉइंट विल कम इन द वेपर जोन, वेट रीजन में आता 0.4, राइट? दैट इज द थिंग, राइट? 3 से डायरेक्टली वहाँ नहीं जाता, वेट रीजन में आता, राइट? पार्ट ऑफ इट्स कन्वर्ट इनटू वेपर, right? Because pressure is going to get decreased, boiling point temperature is going to get decreased, some part is will convert into vapor. Then it is going to the evaporator क्या करता फिर again it will extract the heat from the refrigerant, secondary refrigerant, and it's converted into vapor. Now vapor का 3 केसेस है. वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, वेपर का जो भी टेम्परेचर हीट एक्सट्रैक्ट करे बाहर सेंड करना in the expense of pressure, right? So we are going to use a compressor, फिर condenser, फिर again condenser will convert into liquid, throttling valve convert into lower pressure and temperature. So this cycle will get repeated. Okay, this is the thing. So if you look at the TS diagram, if you look at the point 1 क्या कर रहा है? Vapor enters a compressor, right? Vapor enters a compressor. Now what is going to happen? The compressor will increase the pressure and temperature. It is superheated region में जाता. Again it is 2 to 3 is ये अगेन 3 to 4. सो पॉइंट 1 की बात करेंगे. पॉइंट 1, वाई इट इज़ एट सैचुरेटेड वेपर लाइन, राइट? वाई इट इज़ नॉट बिलो. अगर से बिलो आ रहता पॉइंट तो कंप्रेसर में लिक्विड फ्रैक्शन सब फ्रॉम पार्ट ऑफ वेट लिक्विड जाता था, इसलिए फॉलिंग वगैरह जो भी होता कंप्रेसर ये होता ये ख़राब हो जाता. इसलिए पॉइंट 1 इज़ ऑप्टिमम पॉइंट. वाई इट इज़ नॉट एट सुपर हीटेड रीजन? वाई? बिकॉज अगर से सुपर हीटेड रीजन में रहता तो लार्ज वॉल्यूम रहता होना पड़ता अपने कुछ मोर वॉल्यूम, more work is required, right? More work is required. So large volume compressor use करना पड़ता, तो more work is required. So that's why the optimum point is 1. So 2 पे same है, 3 पे saturated liquid, and 4 पे because of the wetness liquid plus vapor. Right. So analysis में we need to know point 1 का, 2 का, 3 का, 4 का कैसा एंथैल्पीज निकालते हैं अपन, that we must know. So point 1 का एंथैल्पी अगर से निकालना है अपने को, so there are more cases. So let's talk about first case. Point 1 का एंथैल्पी निकालना है बोले तो it is एंथैल्पी Hg, right? That PL टेम्परेचर, PL प्रेशर पे जो भी अपना Hg है, that is एंथैल्पी at point 1. एंथैल्पी at point 2 निकालना है, एंथैल्पी at point 2 निकालना है अपने को, तो we must know the pressure at point 2 and temperature at point 2. We can find. If we don't know the temperature at point 2, all we can do is you can find the प्रेशर फाइंड आउट करना, प्रेशर फाइंड आउट करके एंट्रोपी फाइंड आउट करना. एंट्रोपी ऑफ 2 इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ 1. सो प्रेशर और एंट्रोपी दो प्रॉपर्टीज है, रेफ्रिजरेशन टेबल जाके वहाँ पे एंथैल्पी निकालना. दैट इज द सेकंड केस. एंड द थर्ड केस इज अगर से एन दिया, एन बाई एन माइनस 1 इंटू P2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, दिस इज द वर्क डन बाय द कंप्रेसर, राइट? सो फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ H1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस W. Q इज 0, राइट? H2 इक्वल टू H1 प्लस W इनपुट, यहाँ से निकाल सकते हैं. और चौथा केस है जब pH equal pH plus Hg at pH, Hg plus at pH plus CPV T2 minus T saturation. Okay, that gives you H2. So these are the 4 cases you can find the enthalpy at point 2, right? Point 3 पे it is enthalpy HF at pH. Point 4 पे there will be same enthalpies, H3 का enthalpy equal to H4 का enthalpy. Now all you need to do is W input कैसा निकालते हो that we know.
2 to 3 it is 2 to 3 is constant pressure heat rejection process. So इसमें H2 minus H3 gives you heat rejection QR. Refrigeration capacity H1 minus H4 gives you refrigeration capacity. Throttling process में H3 equal to H4. But एक बात ये हो रही कि wave liquid plus vapor, whenever we supply the energy, then it is going to get converted into vapor. Why it is converted? So intermolecular जो भी वो है 1 kg of liquid है समझो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर है. Now latent heat required, right, in order to convert into vapor. So it is going to get energy from its own molecules, right, in its own molecules, right. Energy of the molecules will decrease, there will be bonds will be created, right. So it is getting the energy from the temperature to decrease or pressure decrease हो रहा है तो boiling point temperature decrease हो रहा है, we know, but you need to supply the energy at in order to convert it to vapor. You need to supply some energy. You are not supplying some nothing, no energy. How it is going to get converted into vapor? So that is the point. So it is going to get converted, going to get energy from its own bonds. Concentrated heat addition process. These first law लगाने आना अपने को, और क्या क्या W0 होया तो Q equal to H1 minus H2. Refrigeration effect is H1 minus H4. Refrigeration effect by W input, right, H4 heat pump वगैरह. Refrigeration capacity is m dot power input m dot into refrigeration effect. Okay, these are the things. Okay, so the problems है, when you do these problems you will get the basic idea. Now effect of operating parameters and performance. यहाँ से एक क्वेश्चन आया था 2020 में. देखो क्वेश्चन है ना, कहाँ से भी आ सकते. Just you need to know the जो भी एज में पढ़ा रहे, that those things you must know, right. क्वेश्चंस कैसा भी आते, क्वेश्चन थियरी क्वेश्चंस आते, कुछ क्वेश्चंस कैसा भी आते, राइट. डिफरेंस इन द एवापोरेटर प्रेशर. तो एवापोरेटर प्रेशर जब भी अपन डिक्रीज कर रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो एवापोरेटर जब भी अपन डिक्रीज कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिक्रीज हो रही. बट इफ यू नो कि वर्क इनपुट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज हायर वॉल्यूम, राइट, हायर वॉल्यूम is going to get increase, so work input is going to get increase. Work input refrigeration capacity कम decrease होती, so COP is going to get decrease. Work input is going to get increase, so COP is going to get decreased because work input is going to get increased. So overall pressure अगर से कम रखें अपन तो it is desired on depends on the desired lower pressure. जैसा कि surrounding temperature है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. सो एवापोरेटर प्रेशर अपन कितना डिक्रीज करना है, इट इज बेस्ड ऑन द desired lower temperature, right. Evaporator pressure is must be in such a corresponding saturation temperature must be less than the desired storage space. इसका मतलब क्या है? Evaporation measure should be in such a way that corresponding saturation temperature must be less than the desired storage temperature, right. right, क्योंकि हीट रिजेक्शन के लिए, ठीक है. जैसा कि एवापोरेटर है, एवापोरेटर का स्टोरेज का टेम्परेचर क्या है, राइट. स्टोरेज का टेम्परेचर से कम है, राइट, कम है स्टोरेज का टेम्परेचर है नियरली अराउंड 10 डिग्रीज, -10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो -10 रहा बोले तो जो सैचुरेशन प्रेशर है, saturation temperature must be less than the desired storage temperature, it must be less, right. So in order to decrease the storage, वही है ना, प्रेशर डिक्रीज करने के लिए लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दैट इज द थिंग. increase in the condenser pressure increase करे, again W input is going to increase. What happens to our refrigeration capacity? It is going to decrease, right, it is going to decrease. But if you look कि थोड़ा work input थोड़ा ये होता, refrigeration effect will decrease, so COP will decrease, COP is going to get decrease. So again decrease in the evaporator pressure. Why we are decreasing the evaporator pressure, right. कई को बोले तो जैसा स्टोरेज टेम्परेचर का अपने को सपोज -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपने को -20 पे जाना है. सो वी नीड टू डिक्रीज द एवापोरेटर प्रेशर, वी मस्ट सेट द एवापोरेटर प्रेशर इन सच ए दैट द डिजायर्ड -10 पे जाना है. इट मस्ट बी लेस देन -10. एवापोरेटर टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन, सो दैट हीट ट्रांसफर मस्ट विल टेक्स प्लेस, राइट. सो दैट इज द थिंग. सो एवापोरेटर अपने को आइस होना है तो एवापोरेटर प्रेशर डिक्रीज करना पड़ता. So in the air conditioning we are not going to decrease the evaporator pressure. Okay, COP अपन वो नहीं करते. But in the refrigerators we are going to use decrease the evaporator pressure. Okay, running cost will, if the COP is going to decrease, running cost it is going to increase. Alright. So superheating में क्या है जनरली,
सो सुपर हीटिंग का पॉइंट क्या है जनरली? सुपर हीटिंग जनरली लिक्विड अगर से केसेस कंप्रेसर को बचाना है तो अपने को थोड़ा सुपर हीट करना पड़ता, right, in order to avoid the liquid droplets, right? So compressor cost is very high when compared to, I told you. So work and temperature is going to get increase, refrigeration effect it is going to get increase, COP will increase, coefficient of performance will increase or decrease depending upon the refrigerant. It is not going to increase or not going to decrease, right? So evaporator pressure is same for the safety of compressor, right? So boiling point is same and evaporator pressure is same. Why? So V value, why it is work is going to get increase? Because volume is going to get increase. So that is the thing, superheating. So subcooling में क्या है? Subcooling we are doing why? Because in order to increase the refrigeration capacity, right? That's why we are going to use the subcooling. So अपने को क्या करना है? We don't want to change the evaporator without changing the evaporator pressure. Don't want to change the evaporator temperature. अपने को evaporator temperature change नहीं करना है, right? We need to do superheating in such a way we don't want to change the evaporator temperature. Also we are going to use this, we are going to, if you want to do the subcooling, then what we must to do without changing the evaporator temperature, don't want to change the so subcooling में COP will increase, why? Because refrigeration effect is going to get increased, right? The work done will be same, volumetric efficiency will be same. Yeah, volumetric efficiency will be same for that thing also, right? तो लाइना डाल लेके थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा देख के कर सकते हैं अपन, राइट? प्रेशर पे सेम प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी सेम प्रेशर है, ओनली द टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. इस पे टेम्परेचर सो एवापोरेटर टेम्परेचर भी सेम रहना अपने को, राइट? सो आई डोंट वांट टू इंक्रीज decrease evaporator, don't want to affect the evaporator temperature, but I need the higher temperature at T1. I need the superheated steam at T1. I need only vapor to flow inside the compressor, right? T1 is the inlet of the compressor, right? Temperature at the inlet of the compressor. And also I need the lower temperature and to increase the refrigeration capacity. So I need lower, again I need lower, I need higher refrigeration capacity, right? So for that thing what we'll do, we'll जैसा अपन कूल कर सब कूलिंग में हीट रिजेक्ट कर रहे हैं ना, दैट हीट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन द सुपर हीटिंग, राइट? यूजिंग दैट रेफ्रिजरेटर एज यू कैन लुक कि एवापोरेटर से हीट एक्सचेंजर में जाता है, हीट एक्सचेंजर में जो भी हीट रिजेक्ट हो रही दैट टेम्परेचर विल कन्वर्ट इनटू T1 डैश, अगेन कंप्रेसर कंडेंसर फिर 3 हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, फिर थ्रॉटलिंग हो जाता है, फिर हो डैश ऐसा, राइट? Energy balance in the heat exchanger you can do, right? S3 dash equal to H3 dash minus H3 equal to H1 dash minus H1. This is the thing. Then if you look refrigeration capacity, H1 minus H4, refrigeration effect it is not going to decrease. H1 minus H4, we input H2 minus H1 dash, W will be same, right? Refrigeration effect is going to increase, W input is going to increase CPU. ये चीज़ें हैं, थोड़ा देख लिया. Cascade refrigeration system. The desired storage space is low, then corresponding evaporator pressure is always very low, which results in very low ratio in the azeotropic, very less to increase the as volumetric efficiency cascade. So suppose for example अगर से अपने को -100 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, राइट? सो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली if desired storage temperature, suppose if you need -100 degree centigrade, right? -100 degree centigrade होना अपने को,
So it means that we have to lower our कौन सा प्रेशर, एवापोरेटर प्रेशर कम करना पड़ता अपने को, राइट। एक तो कंडेंसर प्रेशर, एवापोरेटर प्रेशर कम करना पड़ता। इफ यू लोअर द एवापोरेटर प्रेशर then RP value is going to increase or decrease? It is going to increase. As RP value is going to increase, pressure ratio is very much going to increase, then actually volumetric efficiency is going to decrease. इसका मतलब क्या है बोले तो जनरली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज गोइंग टू डिक्रीज इन द सेंस, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, इट इज़ गिवन बाय एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता, राइट, स्वेप्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता, ठीक है, ज़्यादा स्वेप्ट वॉल्यूम रहता, टाइम ज़्यादा लेता और बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता, और अपने को कंप्रेशन बहुत कम होता और एफिशिएंसी नहीं मिलती अपने को ज़्यादा प्रेशर्स को करने के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एक्चुअली, यू नो। So for that thing we are going to use a cascade refrigeration system. So in the cascade refrigeration system our main idea is to increase the volumetric efficiency, right? Volumetric efficiency, I think we have discussed multi-stage, अच्छा multi-stage compressor जो रहता ना, हाँ, right. So volumetric efficiency increase करने के लिए we are going to use two compressors, right? Right. So what we are going to do, first of all क्या क्या करते हैं अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली रेफ्रिजरेंट 1, रेफ्रिजरेंट 2 रहता। रेफ्रिजरेंट 1 एक, सपोज फॉर एग्जांपल इफ टेम्परेचर TH 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, सपोज एवापोरेटर है, एवापोरेटर प्लेस्ड है, राइट, एवापोरेटर है स्टोरेज स्पेस में, देन दिस एवापोरेटर -100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है, जब ये रहता रिक्वायर्ड, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट, वेपर कन्वर्ट होता कंप्रेसर 1 में, इसका प्रेशर भी इंक्रीज होता और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता और कंडेंसर में भेजता, राइट, कंडेंसर में भेजता। सो जो भी हीट वो अपन रिजेक्ट करते हैं कंडेंसर में, दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन द, अगेन वी आर गोइंग टू यूज हीट एक्सचेंजर एंड वी आर गोइंग टू यूज इन द कंप्रेसर 2। सो कंप्रेसर 2 क्या करता, अगेन जनरली वो कंप्रेसर 1 टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करता, दैट एनर्जी वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन द, अगेन एक रेफ्रिजरेंट 2 को अपन हीट करते, फिर दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। कंप्रेसर 2 में अगेन टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता बहुत, अगेन दैट वी आर रिलीजिंग इन द कंडेंसर, फिर थ्रॉटलिंग वाल्व, फिर अगेन एक्सपेंडिंग, ऐसा। So refrigerant we are using, with the help of two refrigerant we are doing the things. So W1, W2 and COP of cascade, you just do the things, okay, analyze the things in the short audio, one short audio. So use of the flash chamber. Generally flash chamber is used between the throttling valve and evaporator, right? It separates the liquid refrigerant and vapor refrigerant. Vapor refrigerant directly passing through the compressor, and the liquid refrigerant we are directly using in the evaporator, right? Right. Providing flash chamber, does not affect the refrigerant and COP. Okay, it is just changing the just we are going to use like liquid and vapor, right? Designation of the refrigerant. So there are saturated hydrocarbon का केस है और unsaturated hydrocarbon इनऑर्गेनिक गैस का केस है। So C, मैं ये लिखा था ना, CHFCl और MnPq. This how you are going to know the thing, okay? Chemical composition है, again R minus M minus 1 into N minus 1 into P, period plus P plus Q equal to 2M plus 2, जैसा कि CCl2F2 दिया। Again we are comparing with the chemical composition, देखो C, M is equal to 0, Cl बोले तो Q रहता, Q equal to 2, F के नीचे P रहता, P equal to 2, right? अगेन पी क्यू आ गया अपने पास और H तो है नहीं, बोले तो N इक्वल टू 0, M आ गया, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग आ गया। सो अपन क्या करें, R माइनस M माइनस 1 N प्लस 1 इंटू पी, जैसा R माइनस 0 1 2, राइट, जैसा ये, फिर R 0 0 2। सो जनरली दो इक्वेशंस यूज़ करके यू हैव टू पुट इन द फॉर्म ऑफ R माइनस M माइनस 1 N प्लस 1 इंटू पी। P नहीं दिया, Q नहीं दिया बोले तो, P नहीं दिया बोले तो P you can find out from this equation, N plus P plus Q equal to 2M plus 2, right? Q नहीं दिया बोले तो भी you can do the things like this, ठीक है।
जैसा R022 को कन्वर्ट करो बोलता, यू कैन कन्वर्ट m-1 0 हो रहा, बोले m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, राइट, एंड n+1 इंटू 2, ऐसा यू कैन डू द थिंग्स मैन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी सेम केस है. इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूलर वेट यू नीड टू नो. फिर वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. सो एक्चुअली जहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा रहता ना, जैसा सोलर एनर्जी वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन द वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एनर्जी अवेलेबल रहती ना, जैसा रेगिस्तानों में, वहाँ पे यहाँ पे हार्ड कंडीशंस में, there we are using the vapor absorption refrigeration system. Whatever the energy is there in the environment, we are going to utilize that energy. So how you are going to utilize that energy? First of all, there will be evaporator. We are using the absorber and generator in case of compressor. तो जनरली क्या होता, एवापोरेटर से NH3 पास होता, वेपर हो जाता. फिर अब्जॉर्बर में क्या होता, H2O से लिंक होता, वो H2 से मिलके फिर यू आर गोइंग टू यूज अ पंप में जनरेटर में भेज रहे. जनरेटर में से जनरेटर क्या कर रहा, आउटसाइड से जो भी एनर्जी है वो हीट लेके उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा. फिर NH3 वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. NH3 विल सेंट इनटू कंडेंसर हीट लिक्विडिफाइड्स, देन थ्रॉटलिंग वाल्व से उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते लिक्विड वेपर हो जाता हो. फिर उसके बाद एवापोरेटर में भेजते, एवापोरेटर से फिर वेपर NH3 बन जाता, फिर उसको ऑब्जर्वर H2O में यूज़ करते, फिर पंप से उसको पंप करते जनरेटर फिर बाहर की एनर्जी लेके फिर हीट करता, फिर NH3 वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, फिर उसके बाद कंडेंसर में भेजते, एंड दिस साइकिल इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. सो जनरेटर से जो भी अपने को H2O मिल रहा है, H2O अगेन थ्रॉटलिंग डिवाइस से H2O का टेम्परेचर डिक्रीज करके अपन ऑब्जर्वर में कर रहे हैं. लाइक दिस यू आर गोइंग टू यूज वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट. H2O इज एन ऑब्जर्वर, NH3 इज अ पॉपुलरली यूज. इसका COP मैक्सिमम पूछता, राइट. So COP maximum will be, sir know the cycle. First TG जो है वायर का टेम्परेचर, QG वेपर ये, TE बोले तो उसका एवापोरेटर का टेम्परेचर, हीट रेफ्रिजरेशन पे, फिर अपन रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर पे Q0. सो TG माइनस T0 बाई TG इंटू T बाई T0 माइनस TE. ये जनरली सिंपल इक्वेशन है. इसके बाद गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम. Air is used as a refrigerant which is treated as an ideal gas. It is based on the reverse Brayton cycle, also known as Bell-Coleman cycle. Okay. So actually aircraft में यूज़ कर रहे हैं because इसमें कंडेंसर नहीं है बड़ा, ठीक है, और लो वेट है, एयर यूज़ कर रहे हैं जनरली, ठीक है. दैट इज़ अ केस, राइट. सो एवापोरेटर नहीं रहता, एवापोरेटर की जगह हीट एक्सचेंजर रहता, राइट. हीट एक्सचेंजर विट इज स्टोरेज, राइट. It works on the reverse Brayton cycle. रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल अपन अभी भी पढ़े. ब्रेटॉन साइकिल में क्या है, फर्स्ट ब्रेटॉन साइकिल का लाइन डायग्राम क्या है फर्स्ट, वो उसके बाद अपने को TS प्लॉट करना. लाइन डायग्राम याद रहा बोले तो लाइन डायग्राम से ही सब चीज़ें को रिलेटेड है. लाइन डायग्राम में क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, कंप्रेसर, फर्स्ट कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेसर जा रहा, फिर कंबशन चैम्बर, फिर उसका टर्बाइन, राइट. फिर कंप्रेसर यूज़ कर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट, फिर constant pressure heat addition process, फिर reversible adiabatic expansion process, फिर constant pressure heat rejection process. Like this you are going to use. Okay. So here 1 to 2 reversible adiabatic compression process and constant pressure heat addition process, right. कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती डिक्रीज होती, बट यहाँ पे रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल है नहीं. सेकंड प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन नहीं है, वहाँ पे कंबशन चैम्बर यूज़ कर रहे थे. यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, जनरली कंप्रेसर की जगह अपन कंप्रेसर ही यूज़ कर रहे हैं. सो कंप्रेसर में क्या होता, इट इज़ कंप्रेसर में क्या है अपना 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस कंप्रेसर से स्टार्ट होता. क्योंकि यार कंडेंसर की जगह अपना ये रहता, कूलर टेम्परेचर रिड्यूस करता, एंट्रोपी रिड्यूस होती. कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस 2 to 3. उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द थ्रॉटलिंग वाल्व यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक्सपेंडर यूज़ कर रहे हैं. फिर उसके बाद सिमिलर यू कैन प्लॉट द रेफ्रिजरेशन इज गिवन बाय Qin is given H1 minus H4 यूज कर लो, और CP T1 minus T4. फॉर आइडियल गैस यू कैन यूज CP T1 minus T4. गैस टर्बाइन में H1 minus H4 इफ इट इज़ अ वेपर, राइट.
पेपर में H1 minus H4, गैस में CpT1 minus T4, right? Reversible adiabatic process. So process is, okay, heat rejection process के लिए work done by the expander, right? And work done by the compressor also you can find. Here compressor we are treating as a closed system, इसलिए CpT2 minus T1. There also we treated. कोरिलेट करके करे तो बहुत अच्छा रहता, राइट? सो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय W इनपुट. एक्सपेंडर में अपन वर्क मिल रहा और कंप्रेसर में वर्क देना पड़ रहा. फिर इसके बाद यू विल गेट COP, राइट? COP 1 by RP per gamma minus 1 by gamma minus 1. Okay, as RP is going to increase, COP is going to decrease. That is the case. So this completes your refrigeration. ठीक है.